Today we have to read about the computer work. How does a computer work? You will get the knowledge in this chapter. Real life explain example of IPO process, input and output. A computer cannot work on its own. We need to enter letter, number, pictures and instruction into a computer to make it work. These are called data. Different part of a computer do different tasks. A computer works in three basic steps: input, process and output. Look at the picture. The blunt pencil, sharpening and sharp pencil. Input is dry cloth, process is washing, output is clean clothes. Let us understand these steps by taking an example of our body. When a teacher asks us a question, we hear with our ear and see with our eyes. The ear and eyes are the input units. Our brain stores everything that a teacher says. Then it thinks of an answer and orders us to speak. In this way, the brain works like a processing unit. When we answer with our mouth, it works like a output unit. हमारे आँख और कान इनपुट यूनिट की तरह काम करते हैं और ब्रेन जो है वर्क प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है और हमारा माउथ जो आंसर देता है वह आउटपुट यूनिट की तरह काम करता है. इनपुट. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो डाटा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो कहलाता है इनपुट. वी इनपुट डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस. प्रोसेस working on the data is called processing. The CPU works on the data and does all the thinking and calculation. CPU सारा वर्क कैलकुलेशन थिंकिंग का वर्क करता है जो कहलाता है प्रोसेसिंग वर्क. नेक्स्ट इज आउटपुट. आउटपुट मीन्स देन फाइनल रिजल्ट. व्हेन द CPU finish processing the data, the output is displayed on the monitor. CPU जब अपना प्रोसेसिंग डाटा फिनिश करता है तो वो डिस्प्ले करता है मॉनिटर पर. देन मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. वी कैन से इट आउटपुट डिवाइस. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल. The data and instruction together are the input. Here 2 and 5 are the data and plus is the instruction. Now the CPU will work on the data according to the instruction, i.e. it will add the number 2 and 5. 7 is the correct result or output of the sum. 2 plus 5 is equal to 7. This is output. Computer is work with the input, process and output.